unforgettable experience, and this is no ordinary school. और आपके स्कूल का नाम क्या है? Smile. This is Smile, an NGO from Mumbai for the lesser privileged children. And they are here this week on a whole new world, all because a man who had a stroke of good luck decided to put these children's needs ahead of himself. Hi, I'm Harsh Patroda, and I'm a huge fan of NDTV Good Times. I was recently on their Facebook page when I stumbled across a game called Asian Paints Color a Room Contest. So I applied. It's a contest where they give you a complete makeover. You know, imagine my surprise when I got a call and they said I'd won the contest. One would expect Harsh to get his own room done, but he was playing this game for someone totally different. I'm a volunteer at Smile. My mother and I work very closely with its president, Inakshi Shah. Smile is an organization that works with street children and the underprivileged, and it gives them an opportunity to access education and secure a future. स्माइल 97 में शुरू हुआ था और आज से 15 साल के पहले तो हम सिर्फ 5-7 बच्चे से काम करते थे गार्डन में, और हमारे 2-3 वॉलंटियर्स थे, जिसमें स्मिता आज भी मेरे साथ 15 साल से है। इनाक्षी बहन ने 40 साल में बहुत सारी जिंदगियां बदल चुकी है और कई कहानियां तो ऐसी है जो दिल को छू जाती है। मेरे बचपन से ही माँ बाप ने मुझे मेरे पापा के बहन ने संभाला। मेरे दोस्तों के साथ चौपाटी में यहाँ वहाँ भटकते रहती थी। एक दिन मुझे अनाक्षी मैडम वहाँ पर मिली और मुझे पूछा कि तू पढ़ना चाहती है, तो मैंने कहा हाँ मुझे पढ़ना है, लेकिन मुझे पढ़ाता कोई नहीं। फिर मैम ने मुझे कहा कि हमारे सेंटर में आओ, हम लोग सब तुम्हें पढ़ाएंगे। 7वीं तक क्लास में पढ़ी, फिर बाद में मेरी शादी हो गई। ऐसे हालात में मैं प्रेग्नेंट भी थी, फिर मेरे 2 बच्चे भी हुए। आज मैम के वजह से मेरे बच्चे लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। नहीं तो अनाक्षी मैडम साथ में रहती तो और भी मेरे बच्चे यहाँ पे ख़राब हो जाते थे, और मतलब उनका भविष्य भी ख़राब हो जाता था। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि हर बच्चे को अपनी सोसाइटी में जगह मिलनी ही चाहिए। स्माइल में आने वाला हर बच्चे को मैं उज्जवल भविष्य बना के ही रहूँगी। 4 years ago, Smile moved into this space, but last year was life-changing. They were working with 50 kids all this while, and suddenly they grew to 300. I could see my mum and Inakshi just struggling to cope. Suddenly, this 300 square foot office was so small and insufficient. We were really moved by this story, and we knew that this was going to make a very worthwhile project. So we decided to go ahead with a designer who's great with children. You've already met her before. Please say hello to Shabnam Gupta. Apart from her expertise in the hospitality industry, Shabnam previously transformed one of our contestants, Avantika Guhagarkar's room, from this to this. This is my favorite thing. Very simply put, it's her favorite thing. I have somewhere never let go of the child inside of me, and that's pretty evident with the kind of work we do at my company, The Orange Lane. Is full of color, textures, grunge, everything that's not adult-like. Hi Shabnam, how are you? Very well, Juhi. So are you ready to meet Anakshi and the children who study here? Absolutely, looking forward. Let's not be late for class. Let's go. नमस्ते, नमस्ते। स्माइल का टिपिकल डे सुबह 10 बजे से शुरू होता है। प्रेयर के बाद सुबह और शाम ट्यूशन क्लास चलते हैं और दोपहर को वर्कशॉप। मगर वीकेंड में हमारे बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, जैसे आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस वगैरह। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपके क्लासरूम को एकदम बदलने वाले हैं। तो मुझे आप एक आइडिया दीजिए कि यहाँ पर क्या चाहिए। यहाँ पे कलरफुल दीवारें होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग को देख के बहुत अच्छा लगे, और खिड़कियाँ भी होनी चाहिए जिससे हमें हवा भी लग सके। और मुझे आर्टिस्ट बनने का बहुत शौक है, तो मुझे ऐसे टेबल्स चाहिए जिसमें मुझे आर्ट करने में मज़ा आए। और कोई डिमांड है किसी की? अगर आप हाँ जी बोलो। हम लोग के इधर एक बेंच चाहिए बैठने के लिए। बेंच, ओके। हम लोग के लिए, सब चिल्ड्रंस के लिए एक गार्डन चाहिए। मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड है और उसके सपने भी बहुत है। अगर उसको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे डांस क्लास हो सकते हैं, कराटे हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है,
ये एजुकेशन हो सकता है तो वो बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। So, Shabnam, you have to tell me what you think of this particular project. I'm so inspired right now, Juhi. The moment I met Anakshi and Smita and I heard them talking so passionately about the children and what they need, what they basically do over here at Smile, it just made my heart melt. I just hope I can give the best that I have to create a whole new world for these little kids over here. I have so many ideas right now. What's your plan? The outside needs to be revamped. It needs to get a lot of happiness quotient into the space. Probably try to get them something like a desk for a computer station, definitely blackboards, change the way the color of the space looks, make it a space which they look forward to come to since they spend so much time here. Yeah. So lots right now, yes. So full of ideas right now, I can only imagine. In the meanwhile, I think you can sit and start studying and I'll see you around. Apparently, मुझे आपकी क्लास में शामिल किया गया. Oh my God! ये तुमने अभी बनाया? Over the next few days, the NGO doesn't look as crammed up. The furniture has been put away in storage. The civil workers come in to break away the damaged plastering so Smile can have a brand new facade. Time is the most important factor. And while Anakshi had been considerate enough to give us an entire month, she had one simple request. मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा है पेरेंट्स को यहाँ पढ़ाई में भेजने के लिए, बच्चों के लिए। मैं बहुत टेंस हूँ कि बच्चे आना बंद ना कर दे, इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस जगह को आप एक ब्यूटीफुल जगह बना के मुझे within 1 month of time वापस करें। That sounded like a fair request, one which Shabnam accepted with absolutely no complaints. So the plan of action today is to have Shabnam and Anakshi see the design and freeze on the details. And actually, before we start this discussion with Shabnam, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में कोई ऐसा विजुअल है कि स्माइल को ऐसे दिखना चाहिए? बेसिकली जो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं ऐसा फील करूँ कि मुझे स्पेस भी मिले, एकदम कलरफुल भी हो, मेरी जितनी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी होती है जी, इसकी सबकी यूटिलाइजेशन हो। ओके। और अभी बाकी तो मैं आप शबनम जी आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप क्या इसके ऊपर जादू कर रहे हो। Basically, what we are planning to do is get a lot of light to filter in. Okay. So lower the windows, make the windows larger, replace the wooden shutters with the clear glass shutters with a slight tint to cut the heat off. Right. So we are also getting in the loose wooden furniture, which is going to be natural. And fill in the greens in the grills, so there's that nice visual. Basically, we thought, we'll play with both the doors and do them as nice bursts of colors. We are planning to do a nice blackboard for them, so they can actually sit and get their studies done based on that. Yeah. Also, the kind of color pattern that we are thinking of taking on the inside in the paint, I think is going to add a lot, coupled with the flooring and the furniture and things like that. We are using an assorted mix of colorful patterned tiles, and we are going to be changing the entire floor. Nice, that'll be wonderful. Yeah, it's going to be a nice, happy space. Right. And since we are planning to even treat the exterior like a rainbow amidst everything else, so it's going to actually smile out. Oh wow, we're going with that. That'll be beautiful. I'm already a fan of Shabnam, so when she shared the initial plans with me and Anakshi, I was just blown away because she's planning on adding so much color with the tiles, with the exterior, what she's planning to do with the furniture and opening out the room. If I was studying there, I would be a very, very, very happy kid. They are definitely going to be very, very happy with what about you? Are you going to be very happy? I'm very excited. There's going to be no trace left of what is right now. It's a complete makeover in that sense. Anakshi, with her social work appointments, is a busy lady, and Shabnam wants to make the most of the time available with her, so the three of us are headed out to the site to tackle some core issues. Before the break, you met with the winner of the Asian Paints contest, Harsh Pitroda, and the children of the NGO Smile, who will benefit from Harsh's win and get a whole new world for their studies and activities. We are now down to the task of the actual transformation. उड़ान सेंटर का मेजर प्रॉब्लम ही ये है कि समर में पतरा गर्म होने से पूरा सेंटर गर्म हो जाता है और बारिश में बहुत लीकेज है। इस दो रीज़न से हमारे बच्चे को बहुत तकलीफ होती है और वो पढ़ नहीं पाते। So we've roped in Mr. Sarvaiya of Rainbow Waterproofing Solutions to assess and resolve this problem.
आपका जो रूफ है वो 1 लेवल हो चुका है, बहुत सारे जॉइंट खुल चुके हैं, अंदर की जो हुक्स वगैरह लगी हुई है वो भी जंग खा चुकी है, वो रिप्लेस करना पड़ेगा। टूटे फूटे सीट जो है वो बदली करना पड़ेगा। जो रूफ का प्रॉपर जो लेवल होना चाहिए था वो बिगड़ चुका है, तो पूरी सीट आपकी निकालनी पड़ेगी रूफ की। एंड आपके हिसाब से ये करेक्ट सोल्यूशन होगा मॉनसून्स के लिए? बिल्कुल। With the roofing taken care of and Anakshi happy with the solution, there was one more requirement that Anakshi was very keen on. सेंटर में स्टोरेज की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इम्पोर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशंस, डोनर की चीज़ें, हमारा ऑडियो विजुअल सामान सब कुछ वही स्टोरेज में रहता है। और हाँ, मल्टीपल एक्टिविटी के लिए एरिया तो चाहिए ही, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। There is this fantastic website called Pepperfry.com from where हम सारा फर्नीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है आपको सब कुछ ये वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओह वाह। Anakshi trying to select furniture was such an endearing experience. The sweet lady couldn't believe that she was actually getting rid of all her make-do furniture and replacing it with beautifully handcrafted ethnic Indian furniture. Anakshi ji, this is the kind of almara that we were proposing, which are the closed wardrobes, you know, so we can have two side by side. So I think should be quite hardy in terms of usage for the kids and stuff. अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका ओपन स्टोरेज है, जिसमें आपके सब ट्रॉफीज बच्चों के एंड वो सब आप डिस्प्ले कर सकेंगे। ओके। जो कंप्यूटर टेबल हम प्रपोज कर रहे थे विद स्टोरेज विद लिटिल ओपन शेल्विंग ऑन टॉप फॉर द कॉर्नर ऑफ द रूम, वी वर थिंकिंग समथिंग ऑन दीज लाइन्स। ओ, ये तो बहुत अच्छा है। नहीं, सही में पूरा कॉर्नर अलग सा हो जाएगा। और सबने मुझे ये ऊपर का स्टोरेज तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसमें हम काफ़ी चीज़ें रखते हैं और स्ट्रॉन्ग भी है। मीनाक्षी जी इसको रेस्टोर कर लेंगे एंड इसको हम लोग सेम फिनिशिंग में ले लेंगे सो दैट इट ब्लेंड्स इन विद द रेस्ट ऑफ द स्पेस। ओह ग्रेट। मुझे नहीं लगता है कि मैं जब आऊँगी तभी ये सेंटर को पहचान पाऊँगी या नहीं। मुझे भी बहुत सॉलिड डाउट है कि जब शबनम खत्म करेंगी सब तो मुझे रेकग्नाइज होगा या नहीं। For the course of its transformation, the children of Smile continue with their education and activities in this 100-square-foot room provided by a set of very considerate parents. Hi guys. Hi. How are you? Fine. तुम में से किसी ने उस जगह को देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनक्शी मैडम ने बोली कि वो सरप्राइज से दूर से देखा है। दूर से देखा है? किस किसने दूर से देखा है? सबके सबने दूर से देखा है। तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये नहीं कि पास जाके अंदर जाके दरवाजा खोल के? नहीं? The innocence and humility of these children amazed me, and I suddenly had this idea. How about involving them in the makeover process? And it could make for a fun outing as well. तुम में से कौन मेरे साथ घूमने आना चाहता है? 1, 2, 3, 4 and 5. बाकी सब पढ़ाकू हैं और पढ़ाई करेंगे। तो तुम लोग जो 5 जिन्होंने हाथ उठाया था, मेरे साथ चलोगे अभी? Shabnam, on the other hand, has gotten down to the business of tile picking. Bharat Tiles is one of my most favorite places to come and shop for material. What I love most about their materials is that they customize it based on your requirement for every project. This has to be one of my nicer materials to use all time. While Shabnam browses through the options, Firdaus, the vice chairman of Bharat Tiles, comes by to assist her. Shabnam briefs him on the project and shares her concept. I don't want to do something very structured, not borders or any of the regular patterns. So I was just thinking, you think we could throw in a mixed collection, so it could look quite eclectic and bright, happy kind of a pattern that we could form. Yes, definitely. Yeah? We could do a mixture of all our tiles. Yeah. Let me just show you how it looks. They look lovely, I think. Yeah, I think so. I think it'll be a nice burst of color together. So here you go. Nice. So I think the floor is frozen. Yes, absolutely. Back on site, the workers have begun reconstructing the window frames. Shabnam has decided to lower 3 windows to allow for more light in the space, at the same time sealing away 2 unnecessary ones. She has also instructed her team at the Orange Lane to place an order for ply sheets from Century Ply required to refurbish and strengthen the existing storage and woodwork.
2 डोर लगेंगे, 2 फ्लश डोर है, मेन डोर और बाथरूम डोर। ओवरहेड कैबिनेट है, 14 फीट लंबा कैबिनेट है और पूरा बाथरूम का पार्टीशन को कवर करना है। एक ब्लैक बोर्ड बनाना है, तो उसका प्लाई रिक्वायरमेंट मरीन प्लाईवुड और 2 फ्लश डोर है, 6 mm की 6 शीट है। ठीक है, ये ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं। I, on the other hand, have been trying my best to befriend the kids with some treats. Cheers, everybody! Yay! I've never had a cola in my entire life. This is really good. So guys, आपका इस वक्त दुनिया में सबसे फेवरेट पर्सन कौन है? कोई नहीं? Okay, 1 second, cut. Just cut 1 second. हम लोग अभी इधर आए, मैंने गोला की ट्रीट दी और हम लोग ने बहुत मज़े किए गाड़ी में। तो आप लोग एटलीस्ट कैमरे के लिए ये बोल सकते हो जूही आपका फेवरेट पर्सन है, बोल सकते हो? ओके, सो गाइस, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त दुनिया में आपका सबसे फेवरेट पर्सन कौन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आई न्यू इट, व्हाट अ गुड आंसर। तो तुम लोग ने इतना अच्छा आंसर दिया है। आई एम थिंकिंग कि हम लोग अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह चलते हैं। तुम लोग तैयार हो एक और कार राइड के लिए? फॉलो मी। Now, if you thought this whole exercise was to flatter myself, you're clearly mistaken. I actually plan to put all these kids to work very, very soon, and you're going to find out soon how. So the plan is to meet Shabnam and Harsh Pitroda, who won this Makeover Smile, if you remember, and to give these children a chance to pick out the colors and patterns that they might want in their room. Chale? Yes? This way! हाय हर्ष भैया। हाय, कैसे हो? आपको पता है आप इधर क्यों आए हो? नहीं। तुम्हारे कमरे का पूरा नया मेकओवर हो रहा है। हाँ? प्रिंसेस चाहिए? मुझे मेरे रूम में रेड कलर चाहिए और प्रिंसेस वाला डिज़ाइन चाहिए। मुझे मेरे कमरे में ब्लू कलर विद स्पाइडरमैन पैटर्न चाहिए। मेरे कमरे में एलिफेंट का डिज़ाइन चाहिए और रेड कलर का कलर चाहिए। अरे बाप रे, सब लोग को अलग-अलग चीजें चाहिए। You barely spoken a word and they already know what they want to do. They were like sort of in a Disneyland. They couldn't imagine they'd ever be in a store like this, and it was just amazing. Too many opinions. I think I'm going to leave it to you and Shabnam to take care of this. I'm going to go straight back to site. All right, Harsh. Thanks. All right. See you later. Bye. With enough to keep the kids occupied here, I leave them to their own devices and join the grown-ups, so we can get down to some actual business. Have you guys decided which way we're headed and what colors we're choosing? Something nice and bright and happy from the outside, hopefully. Okay. And maybe the inside could be a little more subtle. So we have a range of Asian Paints wall fashion. And when you look at